हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, एन आईपीएस ऑफिसर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन जी। ही इज करंटली पोस्टेड एज एसपी विजिलेंस शिमला। स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी आई क्यू पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन and it's wonderful to connect with you and also to connect to your audience who are with you. So I'm sure we're going to have a fruitful conversation. So we are very glad that you joined us today for an interview. और हमेशा एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं द लाइफ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर और हाउ लाइफ चेंजेस आफ्टर बिकमिंग एन आईपीएस। लेकिन उस सेगमेंट में जाने से पहले मैं चाहती हूँ जो आपकी जर्नी रही है यूपीएससी सीएससी तक की, अगर उसको आप हम सभी के साथ शेयर कर सके। योर ग्रेजुएशन एंड देन हाउ व्हाट वाज योर आइडिया ऑफ सिविल सर्विस। जी तो मैंने ग्रेजुएशन अपना 2010 में कंप्लीट किया था एंड उस समय में मैंने अपना डेंटिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था। तो उसके बाद मेरा एक विचार था कि क्या मैं यूपीएससी की तरफ जाऊं या अपना विदेश जाके मैं वहां पर अपना डेंटिस्ट्री कंटिन्यू करूं। तो ऑब्वियसली मैंने आई वेट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। तो विदेश जाऊंगा तो वहां भी 2-3 साल का पढ़ाई होता है एंड ऑफ कोर्स इंडिया में रहूंगा तो यहाँ पर भी इफ यू हैव टू क्रैक द सिविल सर्विसेज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। So I then decided that it's a better option if you stay back in India. From a personal point of view also मेरे को लगा वो सही डिसीजन रहेगा। I mean इसके अलावा मेरे को ये भी लगा कि फाइनेंशियली going abroad वहाँ जाके पढ़ना it's going to cost a lot. So that was the thought process behind taking this decision. उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि of course civil services has its own charm. आप सर्विस में आते हैं, यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों को मिलते हैं एंड आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, यू आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस में या आप एडमिनिस्ट्रेशन में जिस भी चीज़ की बात करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स उसका एक अलग एक अंदाज होता है, अलग एक तरीका होता है, अलग एक अनुभव होता है। तो ऑफ कोर्स मेरा जन्म हुआ, इनफैक्ट मेरे डैड भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उसको मैंने एक जो सर्विस है उसको मैं अपने वेरी क्लोजली हैव वॉच्ड द सर्विस सिंस अ स्मॉल किड। सो दैट ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड मी एंड हेल्प्ड पुश मी इनटू दैट डायरेक्शन। सर जैसे आप बता रहे थे कि यू वर आल्सो बैलेंसिंग बिटवीन योर थॉट्स कि फॉर अब्रॉड जाना है या फिर यू हैव टू स्टे बैक इन इंडिया एंड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। तो ऑप्टिंग प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ courage and making your mind solely for this examination. So how did you prepare your mind? Because training your mind for this examination itself is a very, very big task. Gee, I mean, you have hit the nail right there. I mean, that's the most important aspect, I would say, for preparing for civil services. क्योंकि इसमें ऐसा है कि बड़े सारे लोग लिखते हैं इस एग्जाम को, बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपने भी देखा होगा। एंड पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में काफी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। दिल्ली में तो बहुत सीरियस होते हैं, तो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कोचिंग सेंटर्स हैं। तो आप कोचिंग में जाएंगे तो बड़े सारे लोग बोलेंगे आपको इस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है। तो मतलब इट प्लेज ऑन योर माइंड अ लॉट ना। आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो दैट वर्क्स ऑन योर माइंड ऑल द टाइम। तो कंटेनिंग दैट इज आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि देखिए जो हार्ड वर्क है, प्रिपरेशन है, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन है, वो कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई नहीं कर सकता, बट देन आई डेफिनेटली फील दैट एनीवन कैन डू दैट। क्योंकि आप 8 घंटा घर पे बैठना है, आपके माइंड में एक गोल रखा है आपने, तो 8 घंटा बैठ के आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। बट जब उसके बीच में आपका दिमाग इधर उधर उछलता है, बोलता है नहीं ये गलत है, ये सही है, आप जो जिस दिशा में जा रहे हैं मे बी वो सक्सेस नहीं हो सकता है, या इस दिशा में जाएंगे तो सक्सेस होगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो उसको कंटेन करने के लिए there's a lot of self talk. अपने आप को आपको बताना पड़ता है कि आप सही चीज कर रहे हैं। of course at the same time ऐसा ना हो कि आप बाहर जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो और फिर मतलब प्रिपरेशन ना करें। तो आपको of course stay on the track and at the same time आपको अपने आप सेल्फ टॉक काफी करना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है अपने आप को कि डेफिनेटली यू कैन डू इट। एट द सेम टाइम फैमिली भी कई बार आपको मदद करती है, फैमिली, फ्रेंड्स। एंड मेरे केस में मेरे साथ मेरे को 1-2 ऑफिसर्स जो थे जिन्होंने सर्विस क्लियर किया था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड भी किया था। तो उस हिसाब से दैट हेल्प मी अ लॉट इन द मेंटल प्रिपरेशन एस्पेक्ट। पहले अटेम्प्ट में मैं कहना चाहूंगा, पहले अटेम्प्ट में आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, मेरे को लगा हो जाएगा।
दूसरे अटेम्प्ट में फिर बाद में जब हुआ नहीं तो मेरे को लगा यार बड़ा मुश्किल है ये तो, मतलब इट्स समथिंग समथिंग एल्स। दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। सो थर्ड अटेम्प्ट आई केम, तो उस समय तक ऐसे हो गया कि आई मीन इफ यू वांट टू रियली सक्सीड यू हैव टू पुट योर माइंड टू इट। ठीक है, आपका माइंड को काम रखना होगा, आपके माइंड को बताना होगा कि यू कैन डेफिनेटली मेक इट। अगर आपका माइंड इधर उधर जाता रहेगा, उछलता रहेगा, तो फिर देन इट इज नॉट रियली फीसिबल फॉर यू टू एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। So that's what I feel. Mental preparation is very important for that. In fact, it's very very important, and so the way you highlighted पहले attempt दूसरे attempt, because everybody feel कि शायद पहले attempt में ही हो जाए, and as you said you were confident enough. जी बिल्कुल। जो पहले attempt से तीसरे attempt तक की जो journey थी, how was that culminated into? देखिए, पहले अटेम्प्ट मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ उसके इमीडिएट बाद में एक नवंबर में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। तो बाय अराउंड आई थिंक हमारा प्रीलिम्स जो होता है काफी मई जून के उस समय में हुआ था उस तब ना। तो अबाउट 6 मंथ्स का प्रिपरेशन था, तो वो तो ऐसे जल्दी से निकल गया। वो तो थोड़ा बहुत कोचिंग वोचिंग करता रहा, एंड इट वेंट इट वाज देयर, तो आपको पता भी नहीं लगा कि कब आ रहा है प्रीलिम्स। ठीक है, तो उसके बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट करते रहते हैं तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। एंड देन आफ्टर दैट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में हुआ नहीं। तो जब तब नहीं हुआ तो देन आई हैड टू पुट माय माइंड टू इट। मेरे को लगा यार प्रीलिम्स तो करना पड़ेगा जरूर, तो उसके लिए मैंने अच्छा टाइम निकाल लिया। तो मतलब एक 6 मंथ्स मेरे पास था, तो ठीक ढंग से मैंने उसका प्रिपरेशन किया। इनफैक्ट मैं एक सिटी में था, मैं दूसरे सिटी को कोलोकेट किया, तो वहां पर मेरे फादर पोस्टेड थे, तो उनके साथ मैं रहा, ताकि इफ यू आर इन द सेम एनवायरनमेंट, सेम रूम में रहेंगे, तो द थॉट प्रोसेस वोंट चेंज। तो आपका थॉट प्रोसेस सेम रहेगा। जो कभी कभार आपका माइंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस की तरफ जाता है, तो उसी दिशा में जाएगा, उसी एनवायरनमेंट है, वही सराउंडिंग्स है। सो आई फेल्ट देयर वाज अ नीड फॉर चेंज, तो वो चेंज किया। तो उस समय मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया, बट देन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर मेंस। तो मेंस जब आया तब आई अगेन, इनफैक्ट आई वांट टू रीइटरेट दैट मेंस पहले अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से गया, देन प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से गया, देन मेंस सेकंड अटेम्प्ट में 6 मार्क्स से गया। सो देयर इट गेव मी अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे को लगा अब तो इतना छोटा। सो देन सेकंड अटेम्प्ट मेंस होने के बाद अगेन द इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक पता चला कि मेंस नहीं हुआ, तो तब तक प्रीलिम्स आ ही जाता है। So that's how the process goes. So I mean, I felt it was a good cycle. It was a learning process, learning curve. So self development का एक it was a process of self development, I would say. So I would request you if you can highlight a little more about the self development process, because आपने जैसे बताया कि prelims आया, then mains आया, the process, and you're writing again. अच्छा, तो इसमें I would like to highlight the mental process, more than preparing for the exam, है ना। तो इसमें ऐसा होता है कि कभी कभार यू हैव टू फेस अ डायलेमा। मतलब आपके सामने 2 मार्क्स में निकल गया, so देयर probably a candidate would feel I missed by, there are two ways of looking at it. Someone would look at it by saying that I missed by a very small margin, I am very unlucky, it always happens to me, I'm not supposed to be in the service, I'm supposed to do something else. At the same time, you can also look at it this way, आपको यार 2 marks, I mean it's not a big deal. 2 marks is in a competitive exam you have prepared for probably about 4-5 months or maximum 6 months, and missing by 2 marks is just, I mean, I would just say it's just matter of 1 or 2 questions here and there. So that's how you need to probably look at it when you're going and attempting a competitive exam like the civil services. सो हर एक मोड पे ना आपको ऐसे एक चुनौतियां आएंगी, तो हर एक मोड पे आपको इसको पॉजिटिव तरीके से ही देखना होगा। तो दैट इज व्हाट आई फील इज वेरी रिलेवेंट, बिकॉज देखिए सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जब दिया था मेंस, मेरा 6 मार्क्स से निकल गया। तो आई वेंट बैक, आई एनालाइज्ड मैंने क्या गलती किया, तो क्या मेरा मतलब किस पेपर में गलती था, या किस को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और किस चीज को मेरे को और थोड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, वेदर इट इज राइटिंग, whether it is probably analysis, whether it is how I present certain facts, so I looked into all those things. At the same time, I took a lot of positives from what I had done earlier. So that's how you are expected to prepare for the exam. And it's been, I think it's been around 7-8 years now, so I mean this is what I remember very vaguely of the preparation. Yeah, absolutely, sir. As you said that it has been quite a time, but the way you explained was very important. So we've been talking about the journey of UPSC. Now you're on the other side. How the life is after becoming an IPS.
देखिए, आई मीन जर्नी इज समटाइम्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट, तो आप प्रिपेयर करते हैं सोच के कि आप यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, एंड you would be expected to do this, you would be expected to do something else, you would think that your work is very important, very significant, and all those things. But at the end of the day, I would like to say it's just a job, it's just another job. मैं ये नहीं बोलूँगा it's the best you can get, or there is nothing UPSC के अलावा, मतलब इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं. I would definitely say every profession, every job has its learning. Similarly UPSC में भी बहुत learning experience बहुत है. आपको वो लोगों से इंटरेक्ट करना, मतलब रोज इंटरेक्ट करना पड़ता है, एंड यू स्पीक टू देम, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. उनसे भी आपको कई सारी चीजें समझ में आती है. उसके अलावा आप फील्ड में कई तरह के सिचुएशंस देखते हैं, तो आपके बारे में भी आपको कभी कभार एनालिसिस करना पड़ता है, वेदर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया, या आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए था या दूसरे तरीके से कुछ और आपको करते तो और सिचुएशन बेटर होता. So of course, I would say it's a learning experience, but at the same time, I would also say it's just another job. So anybody who is presuming that you're getting into the most important job of the country or something like that, I would not say that's the case. Doing the job diligently and doing the job sincerely is more relevant and more important, is what I would like to say. At the same time, my journey has been really enriching. I was born on the Kerala cadre. I really thoroughly enjoyed. I was posted there for a while, for about 4.5 years. Then I shifted, came to Himachal. My wife is posted here. We both are posted together now. So I get to see a lot of places, meet a lot of new people. आप अलग-अलग जगह पे काम करते हैं. Certain places which you have never thought of visiting in your life, you have visited. So I mean, it's a totally enriching experience, is what I would like to say. Definitely, sir. और जिस तरीके से आपने बताया कि even if somebody is not able to make to the finalist, it's absolutely all right because you have a lot of options now open. Ji, I would like to highlight in this because some of the most prominent names अभी आपने देखा भी होगा. I would not like to take the names. People can go and do a bit of research about them. Many of the people who are actually in the current the setup of the government, or the in various global agencies, or multinational agencies, many of them have attempted the civil services, and some of them not been able to crack it. But then they did not take that as a defeat, or unka life ka matlab, this is the only goal in their life which they have not been able to succeed, and they took it very positively. Many of them have gone abroad, US, UK, कई जगह गए, and वहां पर जाके उन्होंने maybe they did a masters or MBA किया, या अलग अलग courses streams को follow किया, and they have been very successful in their careers as well. So I would like to reiterate that candidates who are preparing for this exam should at the same time probably look at some other exams which are at par, like CAT हो गया, आप विदेश जाना चाहते हैं तो GMAT हो गया, GRE हो गया, TOEFL लिखना चाहते हैं तो वैसे एग्जाम्स हैं जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं या MBA कर सकते हैं. तो दैट गिव्स यू अ ब्रॉडर होराइजन. आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, आपका कोई आप मल्टीनेशनल का एजेंसी में जाके काम कर सकते हैं, या आप बड़े MNCs में जाके काम कर सकते हैं. So that will help a lot. So when an aspirant is preparing for the examination, ये बहुत जरूरी होता है कि हर सर्विसेज से अच्छे से अक्वाइंट हो जाए, ताकि जो अपनी लेवल ऑफ सर्विस है उसको डाक पे वो काफी डिटेल तरीके से भर सके. तो हाउ इम्पोर्टेंट और कितना लेवल ऑफ हर सर्विस के बारे में जानना इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एस्पिरेंट? I mean, it's a very pertinent question. देखिए, aspirants, really serious aspirants would definitely know, I mean, some amount of, they would definitely know what they are getting into. है ना? तो मैं ये कहूँगा कि a person who does not know, probably he can do a bit of research, and it should not be a very superficial research. कभी कभार क्या होता है, लोग जाते हैं online and they just search for what is the salary of an officer, or what is and those kind of what vehicle an officer will have, and those kind of things. I mean, I would say that is not really important. क्या होता है जब सर्विस में आते हैं, आपका at the end of the day आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. तो that is the most relevant aspect and relevant point which you really need to see. कभी कभार क्या होता है, many aspirants who are preparing, they would probably fill some other service, like the foreign service, and then they would say that I wanted to stay back home.
So because उनको उतना knowledge नहीं हुआ होगा जब वो इस चीज को भर रहे हैं, or someone else would fill up some other service which he would later consider is not suitable for his own personality. So at the end of the day, you probably need to look at your own personality, judge yourself. Are you an introvert, extrovert? Do you like interacting with people? Do you like traveling? All these things you probably need to analyze and then take a call on that. So इसके लिए आपको थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च भी करना चाहिए. फॉरेन सर्विस में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या होता है, पुलिस सर्विस में क्या होता है, एंड तभी मतलब आपका कुछ you will have a basic idea and knowledge about where you are heading and what you really want. The expectation that you have before joining the service and now since you're already into the service, are they in harmony? I mean, I would say I'm satisfied. To be very honest, certain times the job is challenging, and I did expect a lot of challenges because I had seen particularly the police service from being my father being an IPS officer as well. So I had seen it from a very close angle. So I knew to some extent the challenge kya hai, and this was one of the reasons I was very happy that I got into the police service as well. So I would say I'm really satisfied, and to take it further ahead, I would say that probably it would be very shallow of me to judge the service right now. It would be appropriate if I judge it at the end of my career. tab mera satisfaction level kya rahega, did I really make the best out of my opportunities or not. That would be a more appropriate analysis of the satisfaction level, I would say. Absolutely. So for the time being, जितना भी टाइम आपको इस सर्विसेज में हुआ है, any incident जो आप हमेशा याद रखेंगे, any challenging or memorable incident? बहुत सारे होते होंगे because it's such a dynamic career, but anything you would like to share with us? I mean, I was posted in Kerala, and तब मैं अपना जो शबरीमला मंदिर है तो उसके इसमें मैं लगा हुआ था. I was the SP there. So that was a very challenging moment because there are a lot of dynamics playing at that time. Women wanted to actually go up and visit the temple. At the same time, there are a lot of group of protesters who wanted to prevent them. And at the same time, you have a lot of other dynamics like what the media thinks or what the system as a whole thinks, what the judiciary thinks, and you have a lot of aspects to look at. And at the same time, you need to take the appropriate decisions at the right time without delaying or without getting bogged down by the scenario situation. So I would say that was the most challenging. I don't want to go into the depth of what I did and what I did right or what I did wrong. That's a totally different debate. So I would say that's been one of my most memorable and I would say satisfying experiences. Kyunki matlab the onus is on you. The buck stops at you. You are supposed to take the call about what is to happen, what is not to happen. At the same time, matlab हमारे job में ऐसा होता है कभी-कभार एक छोटा, I would not say छोटा, I mean brutal murders हो जाते हैं, rapes हो जाते हैं. तो उन scenarios में आप कैसे deal करते हो, उसको investigate करना, taking it to a logical end. So I have had quite a few experiences, and then getting a conviction in those cases. So that has been really satisfying and memorable, I would say. One of the during the COVID times, your efforts have been highly appreciated. You had initiated a mobile-based streamline app where people's entry was monitored in Himachal Pradesh. So if you can tell how that idea originated and how that was monitored. So what had happened was I was posted in a district bordering Punjab. Himachal being, on one side, of course, you have the international border. So during the peak of COVID, every state was trying to, prevent people from coming into their state or, interstate migration and all those things they wanted to stop. And, there were certain dynamics playing at that time. So, of course, at the same time, you had to track all those people who had come, whether they had symptoms or not. So I had worked with the administration at the time in the sense अभी ये इस सिनारियो में because being a border district बड़े सारे लोग आ रहे हैं तो आप इसको कैसे मतलब चेक करेंगे. हमारा पहले का सिस्टम चला हुआ था कि रजिस्टर लेते थे हमारे पुलिस वाले जो नाके में खड़े हैं, हाँ जी आप किधर से आए, क्या क्या भरना है, वो ऐसे मतलब पेन और पेपर में लिखते थे. तो उसको कंपाइल करना, एक डाटा एनालिसिस करना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को आगे जा रहे हैं या so that used to be it used to take a lot of effort and मतलब manpower and man hours. So मैं सोचा, I mean I discussed it with a few friends of mine who are into this software, being from Bangalore. So they came up with this idea and we tried to work it out, and
So, and we developed a software in the process, and it was just a pilot project kind of thing. So so we made it work, and we collected a bit of data about it, and that helped. I would say we were able to compile the data at the end of the day. इतने लोग आए, इतने लोग गए, और मतलब सिचुएशन ये इस डिस्ट्रिक्ट को जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, ये इतने लोग बाहर आए, उसके सिमिलरली इतने गुड्स व्हीकल आए, तो बड़ा अच्छा डाटा एनालिसिस हो गया उससे। डेफिनेटली और कोविड के समय में जिस तरीके से आर एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस फ्रेटर्निटी वर वर्किंग, सर आज आपके माध्यम से सिंस यू आर टुडे विद अस, वी सैल्यूट all the administration and police fraternity for have been working 24/7. Oh, I sincerely thank you for your appreciation. I mean, मैं तो यही कहूँगा कि एज डिस्ट्रिक्ट एसपीज और एट द एग्जीक्यूटिव लेवल हमारा रोल कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम हर एक चीज को माइन्यूटली मॉनिटर कर नहीं पाते हैं, तो हम जनरली जो सिचुएशन चल रहा है उसका डायरेक्शंस हम देते हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो हमारे नीचे लेवल के स्टाफ, डेडिकेशन के बिना हमारा ये जो नौकरी है इतना इजीली हो नहीं पाता है। तो आई मीन more than thanking officers, I would definitely, like to extend my thanks to all the policemen who have actually worked, and many of them have actually sacrificed their life in the process. आगे चलते हैं और बात करते हैं। So we have been talking about the post UPSC life, IPS की life कैसी होती है, because people have been very curious to know what exactly and how life changes after UPSC. थोड़ा सा यूपीएससी जर्नी की तरफ फिर से चलते हैं, और मैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। What exactly the UPSC board is looking in a candidate? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो कहते हैं आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है, but still what officer like qualities they are looking in a candidate? देखिए, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आई वुड से दैट जो आपका नॉलेज है उसके ऊपर वो कभी एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं। तो मतलब वो बिकॉज इट इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें आपका नॉलेज एनालाइज करेंगे, तो वो तो है नहीं। दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस। आपको कोई सवाल अगर पूछते हैं तो आप किस तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं, वेदर आर यू एबल टू आर्टिकुलेट वेल, ठीक है, आर यू एबल टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आर यू एबल टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड कन्विंस देम अबाउट इट, आर यू हैविंग अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन which is being asked from you, are you having a solution based approach? इंस्टेड क्या हो जाता है, यू मस्ट हैव सीन लोअर लेवल में कभी कभार क्या हो जाता है ब्यूरोक्रेसी में, मतलब सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच मिल नहीं पाता है। सो दैट इज व्हाई सीनियर ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। सो मतलब आपका कोई प्रॉब्लम दिया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, वो एनालिसिस क्या है, एंड वो उस दिशा से आपका जो इंटरव्यू है वो देखते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो इंटरव्यू होता है उसमें एक CAF होता है, आई थिंक वो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, DAF या व्हाटएवर यू कॉल दैट, तो उसमें आपका बड़ा सारा बायोडाटा होता है, आपका हॉबीज क्या होता है, आपका मतलब आपने बचपन से कहाँ कहाँ पढ़ाई किया, एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड तो उसमें आप जो भरते हैं यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट। आपको मतलब ठीक ढंग से उसका पता होना चाहिए, उसका ठीक ढंग से आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए, और आपके जो उसमें एक्सटेंडेड क्वेश्चंस कई कबार आते हैं, तो मतलब दे आस्क यू, प्रॉब्ली मेरा हॉबी था वो म्यूजिक के बारे में लिखा था, तो मेरे को उसमें कई सारे एक्सटेंडेड क्वेश्चंस मिल गए, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद दैट। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि पीपल हु हैव फिल्ड अप देयर बायोडाटा, दे नीड टू बी थरो विद दैट, एट द सेम टाइम ट्राई एंड स्पीक टू अ फ्यू पीपल एंड नॉट टू बी वेरी हैव अ वेरी इंट्रोवर्ट एटीट्यूड, बी एक्सट्रोवर्ट, एंड मतलब ओपनली जाके बात करो। आपके अगर किसी ने आपको पॉइंट आउट किया कि आपकी पर्सनालिटी में ये कमियां हैं, you try and improve on that. So I would say that's how you would probably sail through the interview. Some personality test की बात कर रहे हैं, situational questions अगर पूछे जाते हैं कि if you are posted at SP और DM, तो इस तरीके के situation में कैसे react करना है? देखिए ऐसा है, I mean I won't say there is a perfect answer for all this. इसमें मतलब जो आंसर निकलता है वो हर एक आदमी के अनुभव और एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड से जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से निकलता है। बट देन हर एक सिनारियो में ऑब्वियसली एक रैशनल अप्रोच आपका रहता है कि मतलब उसको इस तरीके से डील किया जाए कि वो इशू एस्केलेट ना हो, अगले लेवल तक ना जाए। एज द DM और द SP, द बक स्टॉप्स एट यू। आप हेड ऑफ द ऑफिस हैं, आपके पास जो भी इश्यूज आते हैं पूरे जिले का आपके पास आता है, तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू
कि ये इशू मतलब पूरे हायर लेवल तक ना जाए, स्टेट मतलब उच्च अधिकारियों के पास ना जाए या न्यायालय के पास ना जाए, तो उस तरीके से आपको इसको डील करने का एक आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा मानना वही रहेगा कि ऐसा वाला सिचुएशन को डील करना दैट वुड बी अप्रोप्रिएट, एंड इस तरीके से जवाब देंगे तो आई मीन इट वुड सूट द सिनेरियो। Thank you so much, sir, for talking to us on various issues. हम सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स सजेशंस आप सभी को देना चाहेंगे, द वन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी और द वंस जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद दे आर वो who have lost their hopes but still they are trying. I would say, every champion was once a contender who refused to give up, है ना? तो इसका हिंदी का ट्रांसलेशन आप और अच्छा निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं यही बोलूंगा कि जो भी जिसने भी शुरुआत किया उसने गिव अप नहीं किया, और अंतिम में उसने एक अपना गोल तक पहुंचे, सक्सेसफुली पहुंचे। तो वो ऐसा नहीं था कि उनके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट था या उनके अंदर कोई एक ऐसे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल था। तो हर एक ने अपना वीकनेस स्ट्रेंथ को समझा और उसमें ही ट्राइड टू वर्क थ्रू इट एंड ही मेड इट सक्सेसफुल। सो दिस वुड बी माय मोटो, आई हैव लिव्ड बाय इट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑल्सो। इस चीज को मैं बड़ा सारा, ये रॉकी बैल्बो का एक कोट है, तो मैं इसको बड़ा पढ़ता था और मतलब आई टू टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। Every champion was once a contender who refused to give up. Ending this session with a very beautiful message. Thank you so much, sir, for joining us, and the entire team wishes you good health, good luck.